Hello, children. So, a few more questions I've got for you all from the chapter Water Resources. Okay, so without wasting any time, let's continue with this. And I want you to go through all these questions properly and prepare well for your board exams, right? So, the first question we are getting here is what percentage of total volume of world's water is held in oceans? Okay, exists as soil moisture, remains frozen in ice caps, and is found floating in the atmosphere. In total, what part of the world's water is present in this form? That is actually 99.7%. Okay, so option D will be correct one. Then next is what percentage of water is available and suitable for the use of human beings? For this, you can answer 0.3%. Okay, for our daily use, we can have only 0.3% of water which is present on the earth's surface. Okay, then which of the following statement is not correct about the tank irrigation in peninsular India? टैंक इरिगेशन आपको सबको पता है, टैंक इरिगेशन इज the most common means of irrigation which is actually used in the peninsular regions of India, or you can say the Deccan Plateau, okay, where the surface is rocky. तो टैंक इरिगेशन वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका ये है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टैंक इरिगेशन? ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? आपको बहुत केयरफुली ये रीड करना है बच्चों. जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो नॉट वर्ड जो है उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें आंसर जस्ट ऑपोजिट आपका आ जाता है फिर. ओके, तो यहां पर आपको देना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द टैंक इरिगेशन एंड द आंसर विल बी underground water level is higher. Okay, tank irrigation in the peninsular India. Why tank irrigation is very important means of irrigation? Because this is again one big reason for that कि वहां पर underground water level जो है वो बहुत low है. तो पेनिनसुलर इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो दिस पॉइंट इज रॉन्ग. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू कैन चेक. Rainwater can be easily stored by constructing tanks. This is the point which we find in the peninsular India. Number two, percolation of rainwater is less due to hard rock. That is also correct. Most of the rivers are seasonal and dry up in summer season. ये सारे points correct हैं. तो कौन सा point हमारे पास बचा? Just the option A. Okay. Now, next question is the process of groundwater getting stored between the layers of um, hard rock below the water table is known as, what is it called? It is called as aquifer. Okay, that is called by the name aquifer, the rock which is fully saturated with water, right? Then next is which of the following statement is not correct about the tank irrigation? It is not an expensive means of irrigation. The ground below tank should be rocky. It is easy to build and thus accessible to all farmers. Tanks never dries up and provide water for irrigation during dry season when it is required the most. D is the most important point for this, which is actually not correct in the case of tank irrigation. Why? Just think of it. टैंक ऐसा होता है बच्चों, लाइक एक एक तालाब है, ठीक है, तालाब में जो भी पानी होता है वो ड्राई सीजन में जब बहुत ज्यादा, क्योंकि टैंक का सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है तो वहां पर इवेपोरेशन रेट भी बहुत ज्यादा तेज होता है उस वाटर बॉडी पे. तो नेचुरली ड्यूरिंग द समर सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड द टैंक गेट्स ड्राई. ओके, और उस समय जब हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो ये छोटे छोटे टैंक्स जो होते हैं दे आर नॉट actually you can say reliable sources for providing water to us. तो ये डी पॉइंट जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिगार्ड, क्योंकि यहां पर आपको देना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द टैंक इरिगेशन. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, ऑप्शन डी, right? Then come to next question. It is the type of micro irrigation system that allows water to reach the roots of plants in drops.
अब आप याद करो जो मॉडर्न मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपने पढ़ा हुआ है स्प्रिंकलर इरिगेशन, दैट इज जस्ट स्प्रेड ओवर द प्लांट्स और द क्रॉप्स. ड्रिप इरिगेशन, drop by drop it is going down to the root of any crop. Furrow irrigation, the extra water, or you can say the flood water, is taken away and it is being used by making several furrows in the field, right? And surface irrigation is again different type of irrigation. So all these irrigations बेटा आप लोग देखोगे इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन भी सही नहीं है, फरो एंड सरफेस कोई इनमें से सही नहीं है, बिकॉज ये सारे इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं दे आर नॉट प्रोवाइडिंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट ऑफ प्लांट. ओके, तो इन सभी मेथड्स में कहीं ना कहीं वाटर वेस्टेज हो रहा है, राइट? बट अगर आप ड्रिप इरिगेशन की बात करोगे, ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन in which you will find the wastage, okay, or the wastage of water is minimum, right? And the water is fully utilized by what means? Drop by drop the water is actually provided to the exactly the place where we need to provide the water, okay, that is the roots of the plants or the roots of the crops, right? तो ये ड्रिप इरिगेशन जो है, that's why it is considered as the best means of irrigation which allows water to reach the roots of the plants drop by drop. Okay, B option इसमें correct होगा, right? Now come to next, a type of overhead irrigation in which water is spread directly to all parts of the fields. Overhead irrigation, overhead means sprinkler irrigation जो अभी हम लोग बात कर रहे थे. Sprinkler irrigation is something like the nozzle is attached over the that pipe, and with the help of that it is sprinkled everywhere, right? It moves like this in the roundabout, it keeps moving, and in this way the water is sprinkled. Okay, sprinkled means it ऊपर से पानी प्रोवाइड किया जाता है सारे प्लांट्स या क्रॉप्स को. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का दूसरा नाम है ओवरहेड इरिगेशन, राइट? और जिसमें हम क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वाटर डायरेक्टली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड्स, राइट? तो इसमें कहीं ना कहीं वेस्टेज, अगर आप देखोगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इन विच मेथड द वाटर इज मोर वेस्टेड, right, as compared to drip irrigation, if sprinkler irrigation is given, or the other modern means, suppose furrow irrigation is given or spray irrigation is given, all these methods are having somewhat some amount of water is going waste, right? अब यहाँ पे हमें क्या आंसर देना है? Sprinkler irrigation is the correct option for this, right? Next question is, the indiscriminate use of chemical fertilizers, pesticides, insecticides to increase the farm production has led to increasing what? Groundwater pollution. Okay, because ultimately where does it go, children? जब हम स्प्रे करते हैं, कोई भी, सपोज हमने एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, सॉइल में हमने फर्टिलाइजर डाल दिया है. अब टू गेट बेटर प्रोडक्शन वी आर जस्ट यूजिंग इट, ओके. अब वो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जब हम यूज करते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अगेन टू किल द इंसेक्ट्स, ओके, टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ द पेस्ट्स एंड ऑल फ्रॉम द फील्ड. तो ये केमिकल्स कहाँ जाते हैं? अल्टीमेटली बच्चों, ये सारे केमिकल्स जो हैं, these get settled over the agricultural field, the soil only. And when we provide water, suppose irrigation हमने प्रोवाइड किया, तो वो पानी के साथ में मिक्स हो करके, और जब पानी सीप डाउन होता है, राइट, पानी जब एब्जॉर्ब होता है सॉइल में, जब अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वही पानी के साथ साथ जो है ये सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी कहाँ जाते हैं? They are just going down, okay, and ultimately this water is reaching to the water table, underground water sources, right? And there, along with water, what is reaching now? These strong chemicals. So these all are causing you can say groundwater pollution. Okay, chalo, now next question is, there is need to conserve water. What is the need to conserve water? First point, population, very high population we are having in India. So to fulfill the demand of all the people, we need to conserve water, right? Number two,
irrigation is increasing, because to feed the large population we are doing more and more agriculture, right? अब एग्रीकल्चर जब होगा तो नेचुरली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वाटर इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो उसके लिए हमें इरिगेशन के लिए वाटर भी चाहिए. Okay, so that is again something for what we need to conserve water. And one more very important point given here is the industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्री वेरियस इंडस्ट्रीज नीड अ लॉट ऑफ वाटर इन द डिफरेंट यू कैन से स्टेजेस, दे नीड लॉट ऑफ वाटर. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं. दैट्स वाई द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस ओनर्स इज, इसमें से कौन सा सबसे सही रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड होगा विच कैन बी यूज्ड बाय एन ओनर ऑफ अ हाउस, राइट? इंडिविजुअल हाउस कैन हैव. तो इसमें आप देखो, फर्स्ट वन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज ट्रेंचेस. It's not possible within a house. Number two is on channel storage of water. Again, it's not possible. Creation of new water bodies. Water bodies हम develop नहीं कर सकते house के अंदर. So the best method which is given here is the rooftop rainwater harvesting. Rooftop means the which we have actually done in the chapter when we were discussing about the chapter. Rooftop rainwater harvesting वो होता है जहां पर हम रूफ को, जो हाउस का जो रूफ होता है, उसको हम यूज करते हैं टू कलेक्ट वाटर, ओके, एज अ कैचमेंट, एंड दैट वाटर इज सप्लाइड डाउन with the help of pipes which are called conduits. Okay, and this water goes directly down to one storage area is there. That means a tank is made for that purpose, okay, to store water. That is one thing. And number two is that one more pipe is attached from that storage area, or you can say from the tank, directly to deep inside, you can say, to recharge the groundwater table, right? तो ये पूरा जो है process, that is actually called the rooftop rainwater harvesting. Okay, and this is a method which can easily be used within a house, right? Ab next question kya hai? Which one of the following is not an ideal solution for tackling water shortages? अब इनमें से कौन सा सही मेथड नहीं है? Controlling population growth, conserving water and irrigation, controlling water pollution, ये सारे हो सकते हैं, but practically it's not possible. Okay, और एक और पॉइंट है, ड्रिलिंग लार्ज नंबर ऑफ डीप बोर वेल्स. यस, दिस इज अ पॉइंट विच वी कैन हैव एज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट है, इट इज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इवेपोरेशन, सीपेज एंड कंजर्व वाटर. अब इसमें कौन सा मेथड बेस्ट है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग, या वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर स्टोरेज. इन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे आउट. ओके, सरफेस विच रिसीव्स रेनफॉल डायरेक्टली इज कॉल्ड कैचमेंट. अभी मैंने आपको ये वर्ड पहले कुछ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने बोला था कैचमेंट. कैचमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू कैन से मैकेनिज्म. कैचमेंट उसको बोलते हैं जहां पर हम पानी को कलेक्ट करते हैं. इट कैन बी अ रूफटॉप, इट कैन बी अ कोर्टयार्ड, आंगन को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम किसी ग्राउंड को, फील्ड को यूज कर सकते हैं, राइट? तो जहां भी हम पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैचमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ स्मॉल होल डग इन द सरफेस ऑफ अर्थ टू गेट वाटर. स्मॉल होल, वेल, right? Which of the following is not the conventional source of irrigation? Well, tank, inundation canal, drip irrigation. Drip irrigation is not the conventional source. It is modern method. Okay, next, name the type of irrigation in which water is poured on the field is directed to flow between the narrow channels. इसमें होगा answer furrow irrigation, right? Next question है, this type of canal is drawn from perennial rivers with a barrage to control the water, right? So इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? इनंडेशन कैनाल, परमानेंट कैनाल, पेरिनियल कैनाल, या टेम्परेरी कैनाल? इसमें से सबसे सही आंसर होगा पेरिनियल कैनाल, राइट? दैट मीन्स थ्रू आउट the season or throughout the year, it's getting proper flow of water. Okay, so from any perennial river or any barrage when we construct, or any dam is there, through that
when we are getting actually this canal is constructed through that from it's getting water from that source, so it is going to flow throughout the year. Okay, and it is always more reliable as compared to inundation canals, right? Next question: in this type of irrigation, water is lifted from water table using a uh, using pumps, right? तो इसमें कौन सा हो सकता है? Well, tube well, canals, rivers, tube well. Okay, tanks are an important source of irrigation in which of the following regions? Northern plains, no, that is there, but in it's not most important. Okay, it's just a few areas you can find that. Number two, Deccan Plateau, yes, it is. And coastal plains, no. तो इसमें ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा बी, right? Next question is, irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crops. This has great ecological consequences for the soil. What is it? अब इसमें आप क्या इफेक्ट देख सकते हो? इसमें the best option will be salinization of the soil. That means the salinity in the soil, the salt content in the soil has increased. Okay, there are different reasons behind that, but this is the option A is the correct answer for this. Okay, next है percentage wise this state has the largest area under irrigation. कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है अंडर इरिगेशन? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार. पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया बिकॉज. इसमें सबसे सही आंसर होगा रेनफॉल इज सीजनल. ओके, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर reduce surface runoff. Okay, this is the correct answer. Then next question is, inundation canals are taken from, these are taken from any of the seasonal rivers, perennial rivers, it can be taken out, right? But its level is always higher, which always makes this canal to have water only when the floods are there in the river. Okay, so this is why it is not a reliable source of water. Okay, source of irrigation. Next question, watershed management includes what, which one of all these? Johad. Johad is actually one of the methods of rainwater harvesting which was being practiced in India since long time. Okay, so that is the best answer for this. Next question, rainfall is restricted from June to September except in, yes, Kerala, Assam, Andhra and Tamil Nadu. June to September is what season? If you remember, that is the period when we are getting the southwest monsoons, right? So southwest monsoons jab aate hain, to naturally they are not causing much rainfall over the Tamil Nadu coast. Rest of the entire India is getting major part of its rainfall. The entire India is getting during this period only, June to September, right? Except Tamil Nadu. Why? Because Tamil Nadu or the Coromandel coast is that area which is getting rainfall by northeast monsoons. Okay, major part of the rainfall is received during the northeast monsoon, or you can say the winter season. Okay, so D option is the correct one. Next, main objective of rainwater harvesting kya hai? Number one, raising the underground water level to avoid pollution, right? To avoid percolation and increased demand for agriculture. तो इसमें A option सबसे सही लग रहा है, raising the underground water level, right? Then next question है इसके बाद, surface wells rely on, yes, groundwater. Groundwater, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना. Groundwater we call it like that only, but groundwater means underground water we are talking of. Okay, groundwater वो नहीं है जो ground पर नजर आता है या surface पे नजर आता है. That is called surface water, right? Whenever we use groundwater means we are talking about the underground water. Okay, next question, irrigation is essential because pollution of water, dumping of waste on river banks, of seasonal rainfall, presence of perennial canals. C option is the best one. Okay, next question है, identify the modern method of irrigation. डिग्गी है, covered tank है, inundation canal है और sprinkler irrigation. Naturally
Sprinkler irrigation is the modern method of irrigation. Okay, next question. Tanks are extensively used in which of these states? Kerala, Telangana, Assam, Meghalaya. It is Telangana, right? Then next question, the consequence of the sight that you see could be lowering of the amount of rainfall, right? Then increase in the level of water table, pollution of water, या floods. इस पिक्चर से क्या इंडिकेट कर रहा है ये पिक्चर, लाइक आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इससे? Whenever deforestation is there on large scale, that will ultimately lead to the lowering of the amount of rainfall. Okay, it directly influences the amount of rainfall in that area. Clear? So this is the correct option A. The water harvesting mechanism used in Himachal Pradesh is which one? Zing, Kere, Diggi, Khatri. It is Khatri, right? Success in dry farming can be achieved through deforestation, moisture conservation practices, tilling barren ground, or overuse of underground water resources. क्या कर सकते हैं आप बताओ? इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये हम करके जो है ड्राई फार्मिंग में सक्सेस हम पा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है दीज क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन द लेफ्ट ओवर सॉइल मॉइस्चर, राइट? Rabi crops, Kharif crops, Zayed crops, Kharif and Zayed crops. The answer is going to be the Rabi crops. Clear? Acha. Next is next question for this is the identify the irrigation method which is often known as the overhead irrigation method. Right? अभी हमने पहले ये चीज डिस्कस किया है, ये टर्म ओवरहेड इरिगेशन मेथड. ओके, ओवरहेड इरिगेशन मींस व्हाट? ओवरहेड इरिगेशन बोलते हैं हम लोग स्प्रिंकलर मेथड को. ठीक है, अब स्प्रिंकलर मेथड जो है ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में. क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. Then next is identify the irrigation method that allows the farmer to customize an irrigation program most beneficial to each crop. अब इसमें आप देख सकते हो sprinkler, spray, furrow and drip. All these options are given and which one is there in the picture? This is actually drip irrigation. Okay, right? This is the correct option here. Then come to next one, identify the irrigation method which was the nucleus of the green revolution. इसमें आप कौन सा मेथड आप देख रहे हो जो यूज किया जा रहा है इरिगेशन मेथड? सरफेस वेल, टैंक, पेरिनियल कैनाल या इनंडेशन कैनाल? इट इज पेरिनियल कैनाल, right? So this is actually the question for the related to the various irrigation means. Then next is which of these states is known for this type of irrigation? अब यहाँ पर आप देख सकते हो टैंक इरिगेशन का, टैंक का एक पिक्चर दिया हुआ है. ठीक है, टैंक means we are talking about very commonly we think of the southern states. Southern states means the states which are lying in the peninsular India. तो यहाँ पर आप देखो असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश. आउट ऑफ ऑल दीज which one is the most appropriate answer here? Andhra, right? Andhra Pradesh is the correct answer for this, right? And after this, the last question here is like when we talk about the dam, bund, embankment, या एक और है like check dam. अब इनमें से ये इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें करेक्ट आंसर होगा चेक डैम, राइट? चेक डैम्स आर एक्चुअली चिल्ड्रन, ये बहुत छोटे लेवल पे बनाया जाता है. दिस इज नॉट सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर लाइक अ नॉर्मल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए जो हम डैम्स देखते हैं जो बने होते हैं, कंस्ट्रक्टेड होते हैं जगह जगह. इट्स नॉट लाइक दैट. It is a small check dam, it is called, because it just controls the flow of water, right, in the river. And this is called the check dam, which you can see very clearly in this picture, right? You must have got an idea by this what actually is called the check dam. Okay, clear now? अच्छा, अब बच्चों ये इतने क्वेश्चंस ये सारे जो हैं ये रिलेटेड हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से, राइट? और भी
अभी आगे जो भी MCQs या और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं फिर वीडियोस बनाऊंगी, एंड आई विल ट्राई टू कम बैक अगेन very soon with a few more videos, right? So please keep in touch, and don't forget to revise each and every chapter properly. And once you revise the chapter, go through all these MCQs. Okay, this will make you perfect. Okay, and you are going to be very confident when you will go for the geography board exam, right? And I'm sure that you are going to get 100% marks in this. Okay, so to score 100% marks, just go through all these MCQs very well. Along with your preparation, these MCQs also make is actually all these are going to help you out to score the 100% marks in that. Okay, chalo. Let's leave it here only, right? We are going to meet again in the next video. Till then, bye.